Over to you, Mr. Tag. Yes, Manu. Hello, everyone. Yes, shall I start? Hello, everyone. A very good afternoon to you all. This is Mahanur Khan, a UK Educational Officer from HR Consultant. So if you are interested to apply University of Sheffield, so please feel free to contact us on 0323 4747 This is my number. And our team will assess your documents and guide you about the best suitable course. Furthermore, now I'll discuss a little bit about the HR. So what the HR is. HR is a leading consultancy company in Pakistan that has been working in Pakistan since 1993 with the aim to provide a high quality education option to our youth for the better future of Pakistan and our society. So today we are live with University of Sheffield for our students. And at the beginning, I would like to present a brief introduction about the University of Sheffield. So what the university is and all about the things. So the University of Sheffield is a public research university in Sheffield, South Yorkshire, England. It was first established in 1828 as a Sheffield Medical School. And after that, it received its royal character in 1905 as a University of Sheffield. So Sheffield is a multi-campus university over two campuses area like the Western Bank and the St. George. These are the two campuses. The university is organized into 5 academic faculties composed of multiple departments. And if I talk about the university rank, so among the top 10 of UK universities for research grant funding, and it has become #1 in the UK for income and investment in engineering research according to new data published by the Higher Education Statistics Agency. So furthermore about the worldwide ranking, Sheffield was placed 78th worldwide and 12th in the UK according to QS World University Rankings. And furthermore, we will discuss today about the university criteria, scholarship, entry requirements, accommodation, and much more. So people stay connected with us. And before moving towards our guest, I would like to welcome my colleague, Mr. Tegali Khan. He's an also UK educational officer. So now I would request to Mr. Teg, kindly proceed live session further. So over to you, sir. Thank you, Ms. Mahanur, for your introduction, and Assalamu alaikum to all our listeners. Greeting from HR. I am Teghali Ali Khan, and I'm a UK Education Counselor at HR Pakistan. I hope everybody is well and hopefully practicing social distancing and staying home to get rid of this COVID-19 quickly. UK is you know that UK is a popular destination for higher studies for students from around the world. UK higher education degrees and qualification are recognized by employers and academics worldwide. Students get the opportunity to develop the skills, knowledge, critical thinking, and connection to drive forward their career. So to discuss more about benefits to study in UK and to study at University of Sheffield, we have invited Ms. Alison and Mr. Asim Naeem. Welcome both of you. And I would like Ms. Alison first to please present yourself first, and then Ms. Asim Naeem. Over to you. Thank you very much. Hi, everybody. So yes, my name is Alison Witham and I work in the international department at the University of Sheffield. I went to Pakistan actually for the first time last year. So I had a thorough, enjoyable trip and was hoping to attend this year again. So hopefully I'll get there again soon. So I'll go over a few things that maybe hasn't been noted, but I think half of my job has already been done. Thank you very much. It was a great introduction from the team there.
there. So yes, as already been noted, we are a World Top 100 university, and we are situated in South Yorkshire, which is, if you look on a map, is in the centre of England. A really great location in England. We do have, so just to speak a bit about September 2020, we are intending to start as normal as possible on the 28th of September. That is the current stance. Please bear in mind, due to the pandemic outbreak, this is an ongoing observation. So if things hopefully don't, but if they do get worse in the UK, then obviously we will be revisiting our start dates. But currently, as lockdown in the UK is easing, we are intending to start as normal as possible on September the 28th. And we do only have one intake, which is September. So there is no sort of January start date, which I know some universities do have. So yes, as mentioned, we have many different courses in a number of different areas. Over 800 courses at undergraduate and postgraduate level in general. From Pakistan, we usually get lots of students for management and our engineering programs. So as Mr. Azif Naim is here from the management school, I will just briefly talk a bit about engineering. So we have, for undergraduate students, we have a brand new building called the Diamond, which has 19 different laboratories, state-of-the-art facilities. We've had Rolls-Royce engines donated for our students to look at and work on. We have a virtual reality suite for computer science students, and a robotics arena as well for computer science. A huge electronics and electrical suite for electronic students. Literally 19 different laboratories for all of the different engineering sectors to work with. We also, regarding accommodation, we have guaranteed accommodation for all our international students starting in September. So it's in two different sites, one on the city campus called Allen Court, and one Ranmore and Endcliffe, which is just off campus. Both great facilities, and we also obviously have a number of private housing as well, which students are free to look at as well. Everything, you can have a virtual tour of the university accommodation on our website currently. We do also have, as mentioned, a number of different scholarships available. For those students who are serious about starting in September 2020, currently we still have the £2,000 and £2,500 scholarships available for students. The deadline is the 15th of June, so you do have to get an application and accept your offer before that date to get one of those scholarships. For anyone that is interested in 2021, there are more scholarships available because the deadline is in May to apply, which obviously has passed, unfortunately, for 2020. But we do have 50% scholarships for undergraduate students and 25% for postgraduate. Now, please bear in mind the deadline, unfortunately, for this year for those has passed, but for 2021, please be aware that you can apply for those scholarships. So yeah, in general, the city of Sheffield is a very welcoming city. In the UK, we have over 8,000 international students in total, a very diverse mix from students from over 150 different countries. So it's a very friendly, welcoming city for international students. It's great, as mentioned, great location for those that are interested in the outdoors. There's a lot of sports that you can do outdoors. Obviously, there are probably limited sports for the first few months if it involves within 2 meters, but there's lots of opportunities to get involved with lots of different things at Sheffield. It's also one of the most cost-effective cities to live in the UK, so your money goes a lot further in Sheffield as well. So I think now, if I just a sort of a brief overview, and I know there's questions later, so maybe I'll pass on to Azif to speak specifically about our management school. Of course. Thank you very much, Alison. Yes. Yes, please. Yes, Asif sir, would you please add on something? Then I'll start a few questions that students are asking.
Of course, of course. I'll be as brief as I can. So, assalamu alaikum warahmatullah, and good afternoon, everyone. Listening to this live feed. My name is Asif Naeem, as mentioned earlier, and I am the International Student Recruitment Manager based at Sheffield University's Management School. Although my colleagues both at HR and Alison have mentioned most of what's there, I'll try to concentrate on things which are, I think, very important for students, applicants in Pakistan, and with regards to the management school. So, in particular, the management school, one of the most important things that you need to remember deals with business and management courses, which are one of the most favorite ones when it comes to Pakistan for students applying abroad. The management school, as you can probably tell by the poster behind me, is a Triple Crown accredited management school. We have been accredited by AMBA, AACSB, and EQUIS, and this puts us in the elite of business and management schools around the world. A few other things, apart from triple accreditations, of course, जैसे कि आप लोगों ने ये देखा कि जहाँ तक रैंकिंग्स का ताल्लुक है तो ये एक हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी है. उसके अलावा ये एक रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी है. Those of you who apply to the UK need to understand the difference between a Russell Group university and a non-Russell Group university to start with. तो University of Sheffield एक Russell Group university है. ये एक research based university है. यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट थॉट और रिसर्च यानी कि PhD कोर्सेज होते हैं, और ये तमाम कोर्सेज हम आपको ऑल लेवल्स पे प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो पाकिस्तान से आते हुए वो ये है, स्पेशली लुकिंग एट द करंट conversion rate, which I just checked before this meeting. When it comes to studying in the UK, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि Sheffield certainly is one of the cheapest areas. ये एक इंतहाई चीप यूनिवर्सिटी टाउन है रहने के लिए, तो आप लिविंग एंड अकोमोडेशन में भी बहुत ज़्यादा सेव करते हैं. एंड आई एम कंपेयरिंग शेफील्ड टू मेजर सिटीज़ लाइक लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर. इनफैक्ट इन मेजर सिटीज़ के अलावा जो स्मॉलर सिटीज़ हैं उनके मुकाबले में भी ये सिटी निस्बतन चीप है. तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको जहन में रखना चाहिए. उसके अलावा बहुत मैसिव और बड़ा शहर ना होने की वजह से आप ट्रैवल टाइम में बहुत ज़्यादा सेव करते हैं, जो कि बहुत डिफरेंट होता है लंदन जैसे बड़े शहरों में रहते हुए. तो ये मैंने सोचा कि मैं आपको स्टार्ट में ही एक ऐसी बात बता दूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो रसल ग्रुप स्कॉलरशिप्स, रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ जो स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं, उनमें से शेफील्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स भी वन ऑफ द बेस्ट हैं. बहुत अच्छी तादाद में अवेलेबल हैं, कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं. मैंने ये पॉइंट इसलिए बोला कि वो कंट्री स्पेसिफिक होते थे. कंट्री स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स का मतलब होता है कि एक मुल्क से सिर्फ इतने लोगों को स्कॉलरशिप दिया जा सकता है, 2 या 3 या 4. अब ऐसा नहीं है, अब वो वर्ल्ड वाइड है. तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए शेफील्ड यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हैं. So I won't stretch this too long because I'm pretty sure that questions must be coming in. So we'll move on to the more important bit, which is the question and answer session. And then, of course, all of you would have mine, HR's, of course, and Alison's details to contact us anyway. And then we can take it forward from there onwards. Over to you, Ali. हाँ जी. अच्छा मिस्टर, मैं आपके सवाल से पहले कुछ अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा. जैसा कि हमारी ऑडियंस देखती है कि आज हमारे साथ अवेलेबल है हमारे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के. वो स्टूडेंट्स जो यूके में अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है स्टडी के लिए, अभी अपनी क्यूरीज को लाइव क्लियर कर सकते हैं 0346 4747 पर. अभी कॉल कीजिए, लाइव आपकी जो भी क्यूरीज है आपकी तमाम क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन पर आप अपनी क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं. फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, आइट से रिलेटेड, इसके अलावा जो भी आपकी तमाम क्यूरीज हैं, आपकी तमाम क्यूरीज को लाइव क्लियर किया जाएगा. नाउ ओवर टू यू मिस्टर टैग. Okay, thank you. Okay, my question is about the location. Alison, it is especially for the undergraduate student because parents are quite worried about that who would be the first person to receive from the airport. So would you guys help students once they reach at the airport?
Yes, I can answer that. So historically, we offer a pickup service. So every year in September, on specific dates, we do offer a pickup service for students from Manchester International Airport. Now, please bear in mind that we have done this every single year. We obviously need to assess what we are allowed to do this year, given the social distancing measures. Okay. Presumably, we would obviously have to put on more buses because it's a coach service, and obviously we'll have to isolate students and put them in 2-meter distances. So I don't know if it might be more feasible for us to potentially offer taxi services to students. We don't yet know. So just to let you know, historically, we've always offered a pickup service. I have to just be careful knowing that we're going to have to obviously honour social distancing regulations this year. So I don't know yet if we are going to continue to offer a pickup service in the normal way, which we have done previously. We obviously are aware that 18-year-olds sometimes first time in a different country. So we have things in place to welcome those students and ensure that they are met on arrival and safe and well. It may be the case that we offer transportation services for the student to get individual taxis and then meet them in our accommodation. So that information is yet to be finalised. Historically, obviously, we've done it a different way, but we may have to do it very different this year with the social distancing measures. But yeah, we have a list of students that arrive to us, obviously a list of students that will be going into our accommodation. Please note that if a student does pick private accommodation and doesn't take one of the pickup services that is on offer, the onus is on the student to make their own way to the university and make their own way to the accommodation. So sometimes it is easier for students, especially undergraduate level, most probably, to use the university accommodation, use our pickup service. But we have a list. We encourage students to make contact with their parents when they get here and make sure that they let their parents know they've arrived safe. We also obviously allow parents to attend with their students. So some parents want to help settle their children in. So we can provide hotels. The university itself owns a hotel, Halifax Hall, where parents regularly stay whilst they're settling their children into the university accommodation. So I'd suggest for this year sort of to watch this space, keep looking at email communication to see what the university can offer because of the social distancing regulations. Yeah, we do understand. Okay, Asif sir, this question is for you, and please, listen, don't bother because I would ask this question in Urdu. आसिफ सर, थोड़ा सा इशू ये आ रहा है इस वक्त कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं सितंबर सेशन होगा 2020, और अगर हम फीस पे कर दें और सेशन ना हुआ तो क्या जनवरी में वो कोर्सेज अवेलेबल होंगे, और अगर ऐसी सिचुएशन ना हुई तो हमारी फीस क्या रिफंड होगी नहीं होगी। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई नो, बट स्टूडेंट्स जो हैं ये बहुत सवाल कर रहे हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिहाज से प्लीज जरा इसको एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये है जी कि देखें अभी तक के जो हालात हैं उसके मुताबिक मैं उस पॉइंट तक बात करूंगा, क्योंकि सिचुएशन है दिस इज फॉर स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स आप ये याद रखें कि सिचुएशन जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो उस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सिचुएशन के साथ इवॉल्व हो रहा होता है। तो कई दफ़ा कोई ऐसी बात जो कही जाती है वो डिफिनेटिव नहीं होती, वो फाइनल बात नहीं होती, वो चेंज भी हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ माहौल ही ऐसा है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो सितंबर में सेशन है वो ज़रूर होगा और वो हम सितंबर में ही करना चाह रहे हैं। अभी तक हम उसको डिले नहीं करना चाह रहे, हम नवंबर, दिसंबर, जैन नहीं करना चाह रहे। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप ये बात याद रखें कि मोस्टली रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ में जैन, फेब, मार्च, अप्रैल सेशंस नहीं होते, सिर्फ एक सेशन होता है और वो होता है सितंबर में।
ठीक है। रसल ग्रुप में बार बार ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ क्योंकि रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ में ये चक्कर ही नहीं होता कि कितने सेशन हैं। ये स्पेशली जब मैं पाकिस्तान में आता हूँ तो मेरे से ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हम उस वक्त आ जाएं या उस मंथ में आ जाएं या उस मंथ में आ जाएं। हमारे लिए साल में सिर्फ एक सेशन होता है और वो होता है सितंबर में, और हम उसी को लेके चलना चाहते हैं और उसको डिले नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हमने उसको डिले किया तो उसके रिप्रिकॉशंस बहुत होंगे। वो पढ़ाई इतनी ज़्यादा, ये कहना आसान है कि आप कवर कर लेंगे और स्टूडेंट्स भी श्योर होते हैं कि वो कवर कर लेंगे, लेकिन वो कवर नहीं होती चीज़ें, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। तो पहली बात कि हम सितंबर में ऑन हो रहे हैं। दूसरी बात, हमारी कोशिश ये होगी कि हम क्लासेस को फेस टू फेस करें जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकती है। लेकिन कुछ लेक्चर्स, कुछ ऐसे आपकी क्लासेस होंगे जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती, कॉमनली स्पीकिंग। फॉर एग्जांपल क्लास का साइज बड़ा हो तो वो फिर हम उस लेक्चर को हम ऑनलाइन कर देंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि सब कुछ ही ऑनलाइन ही चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई ऐसी एजुकेशन स्टडीज होती हैं जिसमें आप सब कुछ ऑनलाइन पढ़ ही नहीं सकते, आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन आपका बड़ा जरूरी होता है। तो इन अदर वर्ड्स, ऑल्दो कि ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन ये मिक्स एंड मैच होगा, कुछ ऑनलाइन होगा, कुछ आप फेस टू फेस करेंगे। ये हो गया। दूसरी बात जो कि मेरा ख्याल है कि मैंने अभी तक जिस मुल्क से भी मैंने बात की है वो चीज़ ज़रूर आई है कि अगर वो हो या ना हो तो हमारे डिपॉजिट का क्या बनेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम £1000 डिपॉजिट मांगते हैं, लेकिन अगर आप कोविड-19 की वजह से नहीं आ पाते, ठीक है, आपकी रीज़न यानी कि जेन्युइन और सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए, तो आपको आपका डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। ठीक है। ऑल्दो आई मस्ट वार्न द स्टूडेंट्स के आमतौर पे नॉट जस्ट शेफील्ड, कोई भी यूनिवर्सिटी डिपॉजिट्स बेशक लेने में जल्दी जरूर करेगी, लेकिन देने में जल्दी कभी नहीं करेगी। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम लगता है, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आपके पैसे जाया नहीं होंगे, वो आपको वापस मिल जाएंगे जो डिपॉजिट के होते हैं। ठीक है। फिर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि डिफर करना चाहेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो एज लॉन्ग एज के वैलिड, मैं तो इस चीज को इन्विजन कर रहा हूँ कि बहुत सारा इस तरह होगा अभी इस दफा, लेकिन ये भी मिक्स्ड है, ये भी मैं आपको बताता चलूं। कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां से सब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कोई भी डिफर नहीं कर रहा। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा मुल्क है और वहां पे कितना अफेक्टेड है कोविड-19 की वजह से। मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई मुल्क बहुत ज्यादा अफेक्टेड है तो वो तो वैसे पहले ही बच्चे तैयार, वो मसले से वो बैठे होंगे। उसके बाद फिर आप न्यूज में मुख्तलिफ चीजें देखते हैं दूसरे ममालिक के बारे में, तो आप देखते हैं, सुनते हैं, घबरा जाते हैं। लाइक दिस ऑन द अदर हैंड देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर कंट्रीज, और मुल्क ऐसे हैं जहां पे इस चीज ने इतना अफेक्ट नहीं किया या उतना इफेक्ट नहीं किया जितना पाकिस्तान को लेट्स से किया या यूके को की। तो वो उनकी अप्रोच जरा डिफरेंट है, वो फिर आएंगे और उनका हिसाब किताब जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको आपके डिपॉजिट्स जो हैं वो वापस मिल जाएंगे अगर आप कोविड-19 की वजह से नहीं। सबसे पहली बात यह है कि आपकी एम्बेसीज तो खुलें, ठीक है। अभी तो यानी कि काफी सारे पॉइंट्स बीच में हैं, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जब भी एज अ रूल ऑफ थंब, ये प्लीज आप स्टूडेंट्स याद रखें कि जब किसी चीज में आपका कसूर नहीं होता ना डायरेक्टली, तो फिर ये जिम्मेदारी आपकी नहीं होती। अब अगर एम्बेसीज नहीं खुल रही और वीजा नहीं मिला तो इसमें आपका कोई, आई थिंक कॉमन सेंस ये कहती है कि आपका कोई इसमें लेना देना या कसूर या गलती नहीं है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस कोविड-19 से रिलेटेड होती हैं, आपको वो मिल जाएंगे, आपका डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा। और जैन तक, यानी कि हमने कोई दूसरा, अभी तक तो हमारी कोई ऐसी रिपोर्ट या न्यूज़ नहीं है कि हमने कोई और सेमेस्टर शुरू करना है या नहीं करना, और मोस्टली जो रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज हैं वो कर भी ले रही हैं। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया। उसके बाद मैं कोई एक और चीज़ ऐसी थी जो मैं मेंशन करना चाह रहा था, गोइंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने आने के बारे में पूछा। ये भी हर साल काफ़ी लोग मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। अच्छा, तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ याद रखें कि ये देखें, एक मुख्तलिफ, एक डिफरेंट मुल्क ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ें इतनी भी डिफरेंट नहीं है जितनी आप समझ लेते हैं कई दफ़ा। ठीक है, और आप पाकिस्तान को इतना भी मुख्तलिफ या इतना भी यानी कि पीछे ना समझें कि वहाँ पे आपको इन चीज़ों का, आपको आदत नहीं है या आप डील नहीं कर सकते या आप बात नहीं कर सकते। तो आप इन चीज़ों से, आई कैन अंडरस्टैंड कि स्पेशली पेरेंट्स को इन चीज़ों का होता है, जो इन पर्टिकुलर जो यंग फीमेल्स हैं उनके पेरेंट्स को होती है, लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मैंने बच्चों को हैंडल करते देखा है, और इनफैक्ट आज तक मैंने देखा नहीं कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो। और वो क्यों हुई हो? क्योंकि मैनचेस्टर एयरपोर्ट यहाँ से 1 घंटा दूर है बाय ट्रेन, लेस बल्कि 1 घंटे से भी कम है। जो ट्रेन है वो मैनचेस्टर एयरपोर्ट
तक है। तो मैनचेस्टर एयरपोर्ट से आप निकल के ट्रेन में बैठें और शेफील्ड उतरें और 5 या 10 मिनट, 5 मिनट बल्कि टैक्सी जो है वो आपको यूनिवर्सिटी में उतार देगी आके। अब इस चीज में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि समझ में ना आने वाला हो, या ऐसा हो जिसको देख के आप सोचें कि ये डिफिकल्ट हो जाएगा या वो हो जाएगा। ये हाँ, अगर आप हीथ्रो लंदन में लैंड करते हैं तो वो फिर यहाँ से 3 घंटे वेल बाय ट्रेन 2 घंटे दूर है, लेकिन उसमें क्योंकि वो मैसिव एयरपोर्ट, वो बड़ा एयरपोर्ट है, वो बड़ा शहर है, तो वहां से आपको कनेक्शंस पकड़ते हुए शायद थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ हो। लेकिन उसके अलावा ये इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है जिस तरह किसी ने, मेरा ख्याल है, फ्लाइट लेके कराची से लाहौर जाना हो और वो बंदा परेशान हो कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, एज लॉन्ग एज आपको बेसिक्स पता हो। और आजकल जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये इंटरनेट ने और यूट्यूब्स वगैरह ने इन चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। ये आपकी पॉकेट में ये चीज़ें, और इट वुड बी नाइस ऑफ यू स्टूडेंट्स कि आप और चीज़ों के अलावा भी अपने फ़ोन को कुछ और अच्छे कामों के लिए भी यूज़ करें, और आप ये नॉलेज देखें, इट्स राइट देयर। एक ट्वीट आप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और आपको मैं ये चीज़ भी बताता चलूँ थ्रू माई एक्सपीरियंस, एक ऐसा बंदा जिसने was worked and studied at different universities within the UK, कि शेफील्ड यूनिवर्सिटी जितनी हेल्पफुल यूनिवर्सिटी और हेल्पफुल लोग मैंने, यानी कि आई कैन वाउच फॉर इट, बिकॉज नॉट बिकॉज जस्ट कि मैं इधर काम करता हूँ, ये एक फैक्ट है कि यहाँ पे आपको हेल्पफुल लोग इतने ज्यादा मिलेंगे कि आपको अपने सवालों के अबंडेंस में जवाब मिलेगा। ठीक है। और मोस्टली स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बड़े शहरों से आते हैं, कई स्टूडेंट्स पाकिस्तान से छोटे शहरों से आते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स पाकिस्तान से ऐसे इलाकों से भी आते हैं जहां पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, आई वांटेड टू मेक दैट पॉइंट। वो लोग इंटरनेट पे जाके किस तरह अप्लाई करते हैं, किस तरह ऑफर लेटर्स लेते हैं, ये आप सब लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ। वो भी यहाँ आते हैं और ग्रेजुएट करके अपना आराम से जो उन्होंने करना होता है वो पूरा अचीव करते हैं। तो अगर इफ दे कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो आप ये इन चीजों को आप इतना प्रॉब्लमेटिक ना बनाएं। ठीक है। अपनी ज्यादा जो जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी ज्यादा आपकी जो 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 सोच है, वो आपकी स्टडीज, एजुकेशन के ऊपर फोकस होनी चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एज लॉन्ग एज आपके ग्रेड्स अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। Right, sir. ठीक हो, ओवर टू यू अली। Okay. I have a question, sir. जी सर आसिफ से मेरा क्वेश्चन है। सर जैसे आपने बताया शुरू में इंट्रोडक्शन में कि शेफील्ड जो है इट्स अ लेस पॉपुलेटेड एरिया, तो मोस्टली क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये होता है कि अगर लेस पॉपुलेटेड एरिया है तो हम जॉब वगैरह किस तरीके से हम वहाँ मतलब अवेल कर सकेंगे, तो उसको थोड़ा सा रिलायबिलिटी बता देंगे किस तरीके से, क्या प्रोसीजर है, क्या है। ठीक हो गया मानू, थैंक यू मानू, दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब शेफील्ड एक, इट्स अ स्मॉलर सिटी, इट्स अ छोटा सिटी। छोटा सिटी तो लेस पॉपुलेटेड सिटी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। और स्पेशली यू आर सिटिंग इन कराची। अब कराचीइट्स के लिए तो उसको बताना कि छोटा और बड़ा तो इधर और डिफिकल्ट हो जाता है, वो बिकॉज इट्स अ मैसिव सिटी। नाउ शेफील्ड, ऑल्दो शेफील्ड एक छोटा सिटी है, लेकिन ये इतना भी छोटा नहीं है। इट इज स्टिल द 5th बिगेस्ट सिटी इन इंग्लैंड। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट एक ऐसी चीज है जो मुझे भी नहीं पता थी। शेफील्ड इज मच बिगर देन लेस्टर एंड नॉटिंघम। ठीक है। तो ये यूके, इंग्लैंड का ये 5th बिगेस्ट सिटी है एट द सेम टाइम। ठीक है। तो ये छोटा जरूर है, लेकिन ये इतना भी छोटा नहीं। एक दूसरी बात देखें, जब यहाँ पे जॉब्स की बात आती है ना यूके में, तो ये स्लाइटली डिफरेंट तरीके से वर्कआउट करता है, जिस तरह के वो पाकिस्तान में बैठ के एक बच्चा सोच रहा है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर इस्लामाबाद में है, तो अब रावलपिंडी में ऑफिस है, तो अब उसके लिए ये सोचना कि कराची में जॉब्स कैसी होती हैं और किस तरह होती हैं, ये उसको बड़ी प्रॉब्लम, यानी कि इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसको जाना पड़ेगा कराची। उसको ऑनलाइन बैठे बिठाए अवेलेबल नहीं होंगी चीजें, अनलेस कि उसको जानने वाले उसके हों उधर। ठीक है। यूके में इस तरह नहीं होता। यूके में आप किसी छोटे से विलेज में भी बैठे होंगे ना, तो आप ऑल ओवर द यूके जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मोस्ट जॉब, वेल नॉट मोस्ट, ऑल जॉब एजेंसीज आर ऑनलाइन। ठीक है, वो ऑनलाइन होती हैं, वो सब करती हैं। दूसरी बात, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, इन बिटवीन मैं इंग्लिश में भी बात करूंगा क्योंकि ये जरूरी है कि आपके स्टूडेंट्स, ठीक है, इंग्लिश में सुने। नाउ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड देयर इज अ स्टूडेंट यूनियन।
The University of Sheffield Student Union is the number one student union in the UK. अब वो number one अपनी बिल्डिंग की खूबसूरती की वजह से नहीं है, वो तो वो खूबसूरत है ही है, वो number one अपने स्टूडेंट सर्विसेज की वजह से। अब यूनियन में एक स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी हब है जो कि स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी पे काम करता है। फिर शेफील्ड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट स्कूल, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली काम करता हूँ, या जहाँ पे मेरा ऑफिस है, वहां पे एक और एम्प्लॉयबिलिटी हब है स्पेसिफिक टू द मैनेजमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताने चाह रहा था कि यूनिवर्सिटी में ऐसे ऑफिसेज हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी पे, इंटर्नशिप्स पे, जॉब प्लेसमेंट्स पे, वर्क प्लेसमेंट, वो जो वर्किंग फॉर ईयर जाते हैं बच्चे, इन चीज़ों पे काम करते हैं। कंपनी प्रोजेक्ट्स होते हैं मास्टर स्टूडेंट्स के, उन पे काम करते हैं। तो हमारे पास ये ऑफिसेज हैं, और स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा कि जब वो यहाँ पे आए तो दे शुड बी ऑन वेरी गुड टर्म्स विद पीपल सिटिंग इन दोज ऑफिसेज। उनको जाना चाहिए उन ऑफिसेज में। कई स्टूडेंट्स आते हैं, अब मैंने आपको बताया कि अपने ग्रेड्स पे कंसंट्रेट करें, तो कई स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ग्रेड्स पे कंसंट्रेट करते रहते हैं, वो इन चीज़ों पे बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करते, वो यूनियन का मतलब कुछ और लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, वो आपको इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करती है। इसके अलावा वहाँ पे सोसाइटीज होती हैं, किसी को क्रिकेट का शौक है, किसी को स्नूकर का शौक है। आई मीन देयर आर ओवर 300 सोसाइटीज इन शेफील्ड यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट यूनियन। तो जो चीज़ आप सोच सकते हैं उसकी यूनियन वहाँ होगी, और अगर नहीं है तो आप अपनी बना लें, अपनी Answer, सोसाइटी sir. बना सकते जी। Sorry, one of our students waiting for the answer. Sorry for जी interrupting. जी Varda Rizvi asked this question that I would like to move towards Ellison. That is there any scholarship for PhD in English literature or English language teaching? एलिसन। Wrote in the chat, yes. So our PhDs on our online on our website, there is a PhD finder tool, where students can find PhDs on either their interest by looking at doing a keyword search. If they know of an academic at the University of Sheffield that interests them, they can have a look at what projects that academic has on offer. And on the PhD directory, it will list if it is open for international students and if there is funding available. So we have hundreds of different projects currently going on at the moment, and also many in English. So it would determine if you know what the student is interested in and if it's available to international students, and then each one says if there is funding available. So obviously it is very sought after, fully funded PhDs. UK and international students are all after the fully funded PhDs. So it is obviously highly competitive, but it lists on the website what is available. There are hundreds, so off the top of my head, I don't know if there's one specific for English. I can quickly, just actually whilst we're on, I'll just quickly see if it will load on my machine, just to see if we can gauge if there is. But whilst I go on, I can just sort of explain what I'm doing. So on the sheffield.ac.uk website, if you go on the homepage, which seems to be going slow for me at the moment, and then go on in the search box, just put find a PhD. And then the PhD directory will appear. So I'm just logging onto it now so I can have a look and see if we can put in English. So I'm going to search by department. So what I would do is go on, for example, English. Let's have a look. So I'll go there. And let's just see what's on their home screen. Now, if there's nothing listed, it doesn't mean that there's nothing. Potentially the student can make contact with a PhD professor, explain the research that they are currently doing, and the professor may decide that obviously that's a really good opportunity for the university and want to offer further funding. So that there is that opportunity as well. So let's have a look. PhD scholarships, let's see. So I'm just having a quick look. So it's saying there are several different scholarships available.
let's see if they're available for international. Just bear with me. Yeah, so there are some. There's so it's listed on, if you just follow the instructions I've just said, there are it does list a number of different scholarships. Some are for specific countries. So obviously you wouldn't be eligible to a couple of these. One's a China specific one, for example. Let's have a look. Yeah, it says here that there are some for international students generally, and then it takes you to the link. So yeah, everything's there on the website. So I'd advise the student to have a look and see if there is a project of interest to them, and then follow those links to see if they would be eligible for a scholarship. Obviously, the best students get the scholarship. So the university would be looking at if that student has done any research in that particular area before, and would like to see examples of any research, has anything been printed in journals, and then they would make the decision if that student would be eligible. And please note it's the academics' decision as to who gets the scholarship and place. Okay, thank you so much. Okay. Yes, sir. बिल्कुल, मैं इससे पहले तमाम नोट्स के लिए फिर अनाउंस करना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा इस दिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन कंटिन्यू है, हमारे साथ अवेलेबल है इंटरनेशनल डिजाइन यूनिवर्सिटी के शेफील्ड यूनिवर्सिटी के। आपकी जो भी क्वेरीज है तमाम क्वेरीज को लाइव क्लियर कीजिए, लाइव कॉल कीजिए 0346474743 पर। आपकी जो भी क्वेरीज है स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, आइट्स से रिलेटेड है, वीजा प्रोसेस से रिलेटेड है, इंटेक से रिलेटेड है, जैसा कि आपने सुना सारा इंटेक के बारे में बताया जा रहा है, क्लासेस के बारे में बताया जा रहा है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन कंटिन्यू है। अपनी तमाम क्वेरीज को लाइव क्लियर कीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज है तमाम क्वेरीज को लाइव क्लियर किया जाएगा। जी मिस्टर टैग, नाउ ओवर टू यू। थैंक यू। Listen, I have a question. Yeah, Manu. Yeah, please go ahead. Listen, actually, you said about the scholarship. So it means that university is not offering any fixed scholarship to international students. Do you want me to answer this one, Asif? Yeah, we do have scholarships. So we have general scholarships for undergraduate and postgraduate students that I can talk to you about. So we currently have, so for 2020 intake, there are obviously deadlines for our scholarships. So some deadlines have unfortunately already passed. So we have 50% scholarships for undergraduate students and 25% scholarships for postgraduate taught students. But the deadline to apply was in May. So unfortunately, the students for 2020 have just missed out on that deadline. What we still have available for 2020 is £2,000 and £2,500 scholarships. So it's dependent on what subject they are interested in. So for example, 2,500 is for the science faculty and engineering faculty, and then the 2,000 scholarship is for other areas, other subject areas, and they are guaranteed if the student gets an offer at the University of Sheffield. But again, the deadline for that is the 15th of June. So after the 15th of June, yes, all the scholarship deadlines have then passed for 2020. Okay, thank you. Okay, Asim sir. मानूर, मैं इसमें ऐड करता चलूं। देखें, जो स्कॉलरशिप्स हैं, जब बात होती है ना रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज की, तो उनमें हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ये मेनली दो किस्म के हैं। एक वो हैं जो ऑटोमेटिकली दे दिए जाते हैं 2000 to 2500 जो भी एलिसन ने मेंशन किया, और दूसरे मेरिट स्कॉलरशिप हैं जो अंडर ग्रेजुएट पे 50% है, पोस्ट ग्रेजुएट पे 25% ऑफ ट्यूशन फी है। लेकिन एज इट सेज मेरिट स्कॉलरशिप, तो उसके लिए उनको एक छोटे से ऐसे कंपटीशन कह लें या कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स उनको देने पड़ते हैं, वो उनको ऑटोमेटिकली नहीं मिलते। ठीक है, तो दैट्स इन शॉर्ट। इसका मतलब ये कि कुछ स्टूडेंट्स का बेसिकली टारगेट होता है कि जैसे 50% स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को मिलती है। अगर सब अप्लाई करें तो सबको नहीं मिलेगी, उसके उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देखते हैं। जो 50% अब स्कॉलरशिप्स है ना, तो वो उनकी तादाद भी 50 ही होगी। ठीक है। अब 25% स्कॉलरशिप्स है तो उनकी 125, तो वो एक स्पेसिफिक तादाद में अवेलेबल होते हैं, तो उतने को मिलते हैं। अच्छा आसिफ सर, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर कि जिस तरह आपने भी स्कॉलरशिप के बारे में बताया, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अब जिस नॉर्मल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, लेट्स से कि 50% है, 55% है, तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स होती है या एक स्पेसिफिक एक जो परसेंटेज पर दी जाती है या एक स्पेसिफिक एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी।
देखिए, हम अपने स्कॉलरशिप्स को ना बच्चों की जीपीए पे बेस नहीं करते, सिर्फ उनके ग्रेड्स पे बेस नहीं करते, क्योंकि इस तरह तो सिर्फ जो टॉप पे के ग्रेड्स के बच्चे चुनना एक बड़ा डिफिकल्ट होता है, और उनकी माशाल्लाह पाकिस्तान से तादाद बहुत ज़्यादा होती है, सारे ही वो अच्छे ग्रेड्स पे होते हैं, ठीक है। तो हम देखिए, अच्छे मार्क्स लेने पे ही इधर यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि बिलो एवरेज बच्चा यहाँ पे नहीं आ सकता, एक डिसेंट लेवल का बच्चा यहाँ पे अप्लाई करके पहुंच सकता है। तो इसलिए जब वो यहाँ पे उसको एडमिशंस लेटर इशू हो जाता है, तो हम उसके ग्रेड्स के बारे में इतना नहीं देखते, हम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए उसको एक डिफरेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लिस्ट भेजते हैं, या उसको हम एक छोटे से कंपटीशन में उसको डालते हैं, और उस कंपटीशन की बेस पे और जीपीए की बेस दोनों को मिला के हम उसका फैसला करते हैं। वो इस तरह के, अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस का जवाब दिया है और कुछ और लोगों ने भी दिया और सारों के जवाब बहुत अच्छे हैं और समझ नहीं आ रहा कि किसको पिक करें, तो ऑब्वियसली फिर मैं उसको पिक करूंगा जिसका जीपीए हाई होगा। अगर जीपीए भी सबका हाई है तो फिर मैं उसको पिक करूंगा जिसका आईएलटीएस हाई होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि अपनी एप्लीकेशन में एक या दो चीजों की बेस पे स्कॉलरशिप नहीं मिलता, पूरी एप्लीकेशन की बेस पे स्कॉलरशिप मिलता है, इंक्लूडिंग रेफरेंसेस। एंड प्लीज रिमेंबर, वी रीड देम। जो पर्सनल स्टेटमेंट्स होती हैं या रेफरेंसेस होती हैं, हम उनको बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो ये सारी चीजें एडमिशन के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, लेकिन एडमिशंस के अलावा जब आपकी आगे चल के ये चीजें स्कॉलरशिप टाइप चीजें जब इन्वॉल्व हों, तो उस वक्त आपको इसका बड़ा फायदा होता है। तो वो सिर्फ एसए की बेस पे या क्यूएनए की बेस पे या पर्सनल स्टेटमेंट की बेस पे या सिर्फ जीपीए की बेस पे नहीं देंगे, हम इन सब चीजों को कंबाइन करेंगे और फिर देंगे। ठीक है, एक लास्ट मेरा ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन था यहाँ पर कि लेट्स से एक बच्चे का सीजीपीए बहुत अच्छा है, आपने बताया कि 50% स्कॉलरशिप दी जाए, तो क्या अप टू 50% होती है, अप टू 30% होती है, या एक फिक्स स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है? जो मेरिट स्कॉलरशिप है वो 50% है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है। तो वो 50% को हम 30, 45 या 55 नहीं करें, वो 50 ही रहेगा, ठीक है। जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 25, जब मैं कहता हूँ 50% है, तो 50% का मतलब है 50% ऑफ योर ट्यूशन फी, 25% ऑफ योर ट्यूशन फी, ठीक है। और ये स्पेशली अंडर ग्रेजुएट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 50% एवरी ईयर है, वो सिर्फ पहले ईयर पे नहीं है, यानी कि 50% ओवरऑल है। The only problem is, and this is dating back 10 years, जब से मैं पाकिस्तान के लिए एक्टिवली काम कर रहा हूँ, कि हमेशा एप्लीकेशंस देर से आती हैं, जब वो उनकी डेडलाइंस या जाने वाली होती हैं या चली गई होती हैं। और अफसोस इस बात का होता है कि जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा लेट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर वो जरा जल्दी अप्लाई करें, थोड़ा सा जल्दी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भी करें तो वो कुछ हो सकता है। लेकिन जब एक दफा, और दूसरी चीज, जब स्कॉलरशिप्स की डेडलाइन गुजर जाए, जो कि हमने इस दफा बहुत एक्सटेंड की कोविड-19 की वजह से, जब स्कॉलरशिप्स की डेडलाइन गुजर जाए, तो बाय अ डेडलाइन वी मीन अ डेडलाइन, उसके बाद फिर वो वापस नहीं आती। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। नाउ ओवर टू यू मिस्टर Okay. टैग। Miss Edison, this question is for you. Now in Pakistan, many students are interested to apply with a program that is available with a placement year. So would you please explain how many courses are available, especially for the postgraduate, available with a placement year? Sorry, I was on mute. So for postgraduate taught programs, there are very limited courses that offer a sort of guaranteed placement. So in the UK and in specifically Sheffield, our postgraduate taught programs are 1 year. So it is difficult to include sort of a placement year as it's a 1-year teaching program. Please note though that we now have the graduate immigration route visa. So students on successful completion of their degree in graduating in 2021 can apply for to stay in the UK for a further 2 years. We have a great careers advice centre that will help them find a placement and a graduate employment opportunities in Sheffield or the surrounding area. So we will help students in finding work placements after graduation. During undergraduate studies, there is obviously
more opportunities to take a placement year because they can extend their studies by 1 year by doing a work placement. This is usually taken in the third year, so sometimes they do year 1, year 2, take a year in industry and then do a final study year. So that is the usual route for undergraduate students. We have lots of opportunities in different departments. Computer science actually has the opportunity for students to get guaranteed work opportunities because we as a university own a company called Genesis, which is specifically for computer science students. But again, the same help and support is given to undergraduate students to find a work placement in their third year. I do want to reiterate, it isn't a guaranteed part of the course. We help the student as much as possible. The student obviously has to help themselves by performing well in the interview. It is competitive. They will still be interviewed, as most jobs require interview procedures. So obviously the best students get those work placements. We've had many students from Pakistan and other international countries get those work placements. But yes, like I say, it's the best students that get those. So for undergraduate students, like I say, it's much easier to extend their degree by 1 year. But for postgraduate students, it's a full-time course. But we help students look for work placements after graduation. Okay. I have a question. Can you tell me about Ielts requirement for bachelor and master students? Yeah, was that Ielts requirement? Yes, Ielts requirement. Can you tell me about Ielts requirement for bachelor and master students? Yes. So for most of our master's programs, the Ielts requirement is a 6.5 with no component under a 6. There are some exceptions. For example, some of our medical programs, due to the level of terminology used, will request, for example, a 7. And also, for example, some of our journalism courses, due to the high level of English that is needed, will also require an Ielts of 7. But the majority of our courses, for example, management and engineering, all require a 6.5. Okay, thank you. Yeah. Yes, please. Okay. Miss, just a moment. Okay, Sir Asif, this question is towards you, and I would like you to please explain about the eligibility criteria for the intermediate students, especially. So, do you offer foundation program, or can O-level student apply at your foundation program? Now, to start with, yes, we do offer a foundation, which is at University of Sheffield's International College by a study group. The college is based on campus, तो वो कोई दूर नहीं है या कोई एक अलग एंटिटी नहीं है, वो भी हमारा एक पार्ट है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से हम इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट्स डायरेक्टली नहीं लेते. अगर आप एक इंटरमीडिएट या FSc स्टूडेंट हैं तो आपको पहले फाउंडेशन करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड इंटरनेशनल कॉलेज में 1 साल का. उसके बाद आप हमारे बैचलर्स में आ सकते हैं. यही चीज़ ओ लेवल स्टूडेंट्स के साथ होगी. You need to be, you must have done A levels or a foundation before you come and join us. This is for the undergraduates. For the postgraduate students, it's slightly different. Similar is the case for undergraduates. के देखें कुछ courses की requirements entrance की ज़्यादा high हैं, कुछ की low हैं. ठीक है. For example, management school में अगर आपने आना है तो आपको equivalent ABBA levels के लेना पड़ेगा. तो और maths आपको GCSE में चाहिए होगा. Engineering would be AAA, depending on which course you go for. Law is AAA as well. तो जो masters है वो most of the programs आप at least 70% और above अगर आपकी percentage है, वो slightly vary करता है GPA कि अब अगर LUMS का student है तो उसका GPA different लेंगे और अगर दूसरी यूनिवर्सिटी है वो, लेकिन overall roughly speaking 70% and above को हम accept करते हैं management school के लिए. और more or less ये मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ, इसके करीब ही बाकी के कोर्सेज भी हैं मास्टर्स लेवल पे. Ielts रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए जो है वो 6.5 है, लेकिन कुछ जिनमें
ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश का लेवल हाई होना चाहिए, जर्नलिज्म हो गया, लॉ हो गया, वहाँ पे फिर ये सब है। अच्छा सर, इस वक्त आपको पता है आइल्स का इशू है, कोविड-19 है, तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस दे रही हैं आइल्स के अलावा, जस्ट लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और एनी ऑल्टरनेट इंग्लिश टेस्ट. So, have your university decided any alternate option for students? Yes, we have, and I'm pretty sure that we'll get it written here soon as well. बिल्कुल हमारे पास ऑप्शंस हैं आइल्स के, अगर आइल्स के सेंटर्स नहीं खुल रहे या ऐसी कोई चीज़ है, और वो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, जो कि आप अपने फेसबुक के ऊपर लाइव भी भेज सकते हैं उनको। जस्ट अ मोमेंट, क्योंकि वो एक नहीं है, वो काफ़ी हैं जो आप आइल्स के अलावा भी कर सकते हैं। ये मैं आपके यहाँ पे लाइव फीड के लिए दे रहा हूँ। आप TOEFL IBT स्पेशल होम एडिशन कर सकते हैं, NCU के इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज सर्टिफिकेट इंटरनेशनल ई-सोल कर सकते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने एक्स्ट्रा दी हुई हैं, और इन तमाम चीज़ों की जो डिटेल है वो जिस जगह पे है अवेलेबल है, वो भी मैं आपको उसका लिंक भी मैंने आपको भिजवा दिया है, ताकि आप अपने लाइव फीड पर बच्चों को दिखा सकें। Okay. Miss Ellison? I have a question. Yeah, Manu, please go ahead. One of our student is asking about how to apply. Actually, can you please tell us the master's criteria, how to apply the program for master's? Of course I can. देखिए मास्टर्स लेवल पे the whole application process is very straightforward and very easy. All they need to do is to, well, it's up to them. They can apply by you. Okay, you can make the application for them, or they can do it themselves. All they need to do is to go online to that course, and then they would see a tab, Apply Now button. They click that Apply Now button and fill in the details. It's as simple as that. We don't charge anything for applications anyway. Actually, CGPA, GPA भी सर अगर आप डिफाइन कर दें कि बेसिकली मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी होता है कि GPA कितनी होनी चाहिए, मिनिमम हमारी इतनी है। देखिए ये आई थिंक लाइव में मैं आपको एक जेनेरिक बात बता सकता हूँ, जो मैंने आपको बताया 70% है अबाउट। सही। अब इसके बाद जो फर्दर डिटेल्स हैं वो डिपेंड करता है कि उस स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन की भी कहाँ से, जो कि हम ऑब्वियसली इस लाइव सेशन में डिस्कस नहीं कर सकते, पर्सनल है ये इंफॉर्मेशन। तो किस यूनिट, अब IBA से जिसने ग्रेजुएशन की है उसका GPA शायद मैं जरा कम भी ले लूं बनिस्बत उसके कि जो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि बिल्कुल कल बनी है, जो ठीक है। तो ये हमें यूनिवर्सिटीज का फर्क उससे बेहतर पता है जितना समझा जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर आपने लॉ में डिग्री करनी है तो GPA कम ही आएगा, ठीक है, हमें इस बात की समझ है, ठीक है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अगर आपने जाना है तो क्या, ये सारी चीजें हमें पता होती हैं, और यूनिवर्सिटी के मुताबिक हम बैंड का फैसला करते हैं कि कितनी। लेकिन वंस अगेन रफली स्पीकिंग, अगर उनको एक एवरेज चाहिए तो उनको 70% अबव चाहिए, मे बी अगर वो लम्स है तो मे बी 65% है अबव। लेकिन आई कैन ओनली टेल वंस आई हैव लुक्ड एट द एप्लीकेशन, वंस आई हैव सीन कि भी कहां से वो बच्चा है, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे जी, इसके बाद जिसमें आपने बताया सर, ये बताइएगा कि स्टडी गैप कंसीडर किया जाता है या नहीं, या बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है। स्टडी गैप का बताइएगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टडी गैप होता है, लेट्स से 4 ईयर का है, 3 इयर्स का है, 2 इयर्स का, तो स्टडी गैप क्या कंसीडर किया जाता है या बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट होना चाहिए? देखिए हम ये पर स्टूडेंट होगा, लेकिन पहली बात ये है कि वो जो स्टडी गैप है उसमें उस बच्चे ने किया क्या है। अगर स्टडी से गैप लेके वो काम कर रहा था, वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ले रहा था, या वो वर्ल्ड टूर पे चला गया था, या उसने कुछ भी नहीं किया, एक जवाब ये भी आता है कि आपने क्या किया 4 सालों में, तो कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया इज नॉट अ वेरी गुड रिप्लाई, एज लॉन्ग एज वो सेंसिबल तरीके से उस चीज को कवर कर सकते हैं, हमें कोई सेंसिबल और रेलिवेंट चीज बता सकते हैं कि हम ये कर रहे थे, तो हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे, ठीक है। वो पर आपके एप्लीकेंट होगा। फिर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पे वर्क एक्सपीरियंस इज अ मस्ट, फॉर एग्जांपल एन MBA,
हम MBA तो वर्क एक्सपीरियंस के बगैर लेते ही नहीं है, तो उसके लिए तो वैसे ही गैप बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो 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 है ना, जो गैप है उसको भी डिफाइन करने की आई थिंक जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि गैप एज ऑफ इन आई वाज डूइंग नथिंग एज कंपेयर टू गैप बिकॉज आई वाज वर्किंग इज वेरी डिफरेंट। और एक सवाल मेरा ये आपसे कि इंटर का जो स्टूडेंट है वो फॉर एग्जांपल बैचलर्स के लिए आ रहा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए या एक साल का भी उसमें अगर स्टडी गैप हो चल सकता है? क्योंकि जिस तरह बहुत से ऐसे हमारे पास क्यूरीज आती हैं स्टूडेंट्स की भी कि और पूछ भी रहे हैं स्टूडेंट्स के इंटर के बाद अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो कोई अगर हमारा स्टडी गैप है 1 से 2 साल का, तो क्या वो कंसीडर किया जाएगा? ये इंटर का बच्चा बिल्कुल फ्रेश ही होना चाहिए तो यूके कंसीडर करता है यूनिवर्सिटी? देखिए ठीक है, इंटर का बच्चा फ्रेश हो सकता ही नहीं है क्योंकि उसने फाउंडेशन करनी है, ठीक है, उसका 1 साल तो आएगा ही आएगा ना, ठीक है, उसने 1 साल तो कुछ पढ़ना है ही है, ठीक है। अब इसके भी काफी सारे तरीके हैं, मैं आपके क्वेश्चन को ना जरा रीफ्रेज कर दूं, जो आपने थोड़ा पहले पूछा कि क्या उनको डायरेक्ट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो जो इंटर का स्टूडेंट है वो यूसिक वो स्टडी ग्रुप के साथ हमारे कॉलेज में आके फाउंडेशन भी कर सकता है, वो एनसी यूके में जाके उनकी फाउंडेशन भी कर सकता है, वो भी रूट उसको हमारे पास लेके आ सकता है, तो उसके पास एक से ज्यादा तरीके हैं आने के, ठीक है। और मैं यानी कि मुझे आपकी बातों से याद आ गया, और स्पेशली आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो एनसी यूके का रूट है वो एक इतना अच्छा रूट है आई थिंक कि वो इट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि लोग समझते होंगे कि ये किस तरह पॉसिबल है कि हम इधर बैठ के 1 साल पढ़ें और वहां सेकेंड ईयर में चले जाएं या फर्स्ट ईयर में चले जाएं। तो उन स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के पास एक से ज्यादा रास्ते हैं आने के, लेकिन फर्क यह है कि उनको एक्स्ट्रा साल लगाना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा साल का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ेंगे। जब ये दोनों चीजें वो कंसिडर करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जो उनको डायरेक्ट दाखिला दे रही हो। कॉमन सेंस ये कहती है मैं अपना टाइम भी बचाऊं, और लेकिन वो ये चीज याद रखें कि वो जिस यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला देंगे उसकी रैंकिंग्स में और हमारी रैंकिंग्स में फर्क जरूर होगा। जब आप एक हाई एंड यूनी में जाते हैं तो उसकी एंट्रेंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। एचएसएन में हर बच्चा नहीं जा सकता, लाइकवाइज। Okay. For our student, we have discussed about the scholarship, eligibility criteria, and everything. But I would like Miss Ellison to please, if you can explain again about the fees structure for the undergraduate and the postgraduate level. We have discussed about the scholarship, but would you please explain it again about the fees, especially? Yes, certainly. So we've got different, our 2021 fees are currently being finalised. For 2020, our fees are range from £16,000 to £24,000 for the majority of our courses. So, for example, engineering courses that require a lot more lab work are £22,000 to £24,000. And so the arts and humanities courses that do not require as much lab work would range between the £16,000 and £19,000, depending on the subject area. That is for undergraduate. For those students that are interested in medicine, the clinical practice years are more. So for those years that require clinical practice, you would be looking at approximately £35,000 per year for those years with the clinical practice. For postgraduate students, our fees range from, again, to £26,000, again, depending on if laboratory work is needed. So, for example, the engineering courses range between £24,000 and £26,000 for the 1 year. If obviously there are lots more lab and technical facilities available for those students. And again, the arts and humanities related courses would be between, some actually start at £18,000 to £21,000 for those courses. Okay. Yeah. Before closing, we have few very important points that students really do ask is about the CAS, especially. So, what documents are required to issue a CAS?
Yes. So, for example, for undergraduate students, obviously this year is going to be very different. So, for those students that are doing A levels and IB, obviously it's the predicted scores. Once we've got all that information, then the university would provide that student with an unconditional offer. So they need their unconditional offer from the university, and then we send our CASs out. So legally they have to go out, UKVI regulations, no more than 3 months before the start of the course. So obviously we intend to start on the 28th of September. So we will be sending our CASs out hopefully end of June, early July. To those students with unconditional offers. So they take their CAS to get their visa. They will need the documentation that they've supplied to the university to get that offer, for example, reference, predicted grades, etc., and their CAS. And also for their visa, they need to show funds in their account. So they will need their funds in their account for up to 28 days prior to going for their visa. Due to obviously inflation rates, we always advise putting a little bit, probably 5% extra in the bank account due to any changes in exchange rates, etc. Yeah, that's generally what is required. And details of potential accommodation as well. That's what is required for their visa. In their CAS, it will explain if they paid a deposit, how much money is left owed to them. If required, we can also provide a letter to show the general cost of living in the UK, but that is available on our website, and usually a printout of that is suffice for most visas. So there is a section on our website that says how much we advise students to save in order to live in the UK for example, 1 year, which is for an undergraduate student, which is between £7,000 and £9,000. And for postgraduate students, it's between £9,000 and £12,000. So they would need that additional amount in their account as well to show that they can afford to live while studying with us. And just to reiterate that the cost of living obviously depends on the students' lifestyle choices. We have had many students live on less, and more flamboyant students obviously live on more. So yes. Okay. Actually, Asif sir, we are discussing about the CAS. So would you please elaborate about the joint CAS as well, because the foundation, because you are sorry, yeah. Study. Yeah. So would you please explain about the joint CAS as well? Yes. So if the student is required, obviously, to do a foundation at undergraduate level, then it was clearly advised on the CAS that the CAS is there for them to do their foundation, for example, with study group at Sheffield, but obviously only if they pass their foundation, they will then be permitted to continue at Sheffield, and it's they can obtain what's called a joint CAS, which is obviously if they are successful, and they will continue to progress into the Sheffield undergraduate degree. Perfect. So this is the last question from my side. Then I would request Mahanu or Tahir to, if they have any question, they can ask. But before leaving, I would like to ask this: what is the deadline to pay the deposit? So then I can motivate my student to secure their seat as soon as possible. Yes, certainly. Yeah, certainly. So it's a bit different this year because of obviously COVID-19. So for staged courses, which is, for example, the management school, so management school, engineering at postgraduate, journalism, and the information school, they are all what's called working under staged admission, which is the open and close of the different courses. They have an extended deadline, which I think was the was that the 15th of
June, Asif? Yes, On I the believe, top of my yes. head, because all these I dates. think, once again, this is from the top of Is my head. I Asif don't, there? yeah. I don't know if he's hearing. You can all hear me, can't you? Yes. Yes, yeah. So yes, I believe, I can't remember it from the top of my head, but yes, I think it is the 15th. We have extended. We've extended it. It was May. So for those students that are in staged admission, such as the management school, Asif's courses, in their offer letter, it will state a deposit deadline. And we've recently extended it because it was the 29th of May. So we have extended it. It is now, so the 15th of June from memory. It is possible, when I say off the record, we don't know if we may need to extend this again, because obviously if certain countries being in lockdown, and the reason we're extending it is we want to give everybody a level playing field, and some countries, banks, etc., have not reopened. So for those courses, I would advise that it will be in the student's offer letter, the date in which to pay the deposit. But at present, for those, it's the 15th of June. For all other courses, so courses that are not in staged admission, at postgraduate level, there is no deadline at the moment. So they'd have to pay their deposit in order to get their CAS. But currently there is no deadline due to the COVID-19. Undergraduate students, again, they have no deadline and no deposit to pay. Yeah. Asif sir, आपसे जी Miss Manur, please. I have a question. My question is related to experience. Like as Sir Asif said that MBA job experience is required. So how much experience is needed for MBA program, sir? Of course, a minimum of 3 years of what we call graduate level working experience. In other words, it needs to be relevant working experience. So it needs to be, अगर ये 5 साल का हो तो और अच्छी बात है. But it can't go below 3. 3 years is a must. The experience is as important as the previous degree. बल्कि कुछ points में तो degree से भी ज़्यादा important है experience. Okay? Okay. So 3 years to put it in short. Okay, thank you. Continue करें आप please. जी आसिफ सर, मेरा सवाल है आपसे. Can you hear me? Yeah, I can. अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जिस तरह के इंटेक के बारे में बात हो रही थी, वो मैंने आपसे डिस्कस करना था. हमारे पास क्वेरी भी है स्टूडेंट की कि आपने बताया कि सितंबर इंटेक किया, तो अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है वो सितंबर इंटेक के लिए जा रहा है, ठीक है, एडमिशन जिस तरह के आपने कहा सितंबर इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल किसी कंडीशन की वजह से सितंबर इंटेक नहीं हो सकती, तो वो स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट इंटेक के लिए. मैं I think सोच नहीं पा रहा कि well anything can happen कि सितंबर इनटेक ना हो. ठीक है. ये चीज क्योंकि अभी तक हमने ये डिसाइड ही नहीं किया कि वो ना हो, तो ये नहीं हो सकता. ठीक है कि वो ना हो. हम सितंबर इनटेक कर रहे हैं. एक बात. दूसरी बात, हम ऑटोमेटिकली नहीं कर देते, वो हम पूछेंगे पहले उससे. ठीक है. तो थोड़ा सा इनवैलिड है मेरा भी आंसर, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, क्योंकि वो हो जो रही है वो ऐसी सिचुएशन ही नहीं है. स्टूडेंट्स के माइंड में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर हम इंटेक के लिए जा रहे हैं तो कोई कंडीशंस का प्रॉब्लम होता है, तो हमें ये चीज क्लियर हो जाए. तो मींस क्या आपका कहने का मतलब है जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी फौरन से अप्लाई कर सकते हैं सितंबर इंटेक के लिए किसी भी. एब्सोल्युटली. बल्कि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ओवरऑल वॉच कर रहा होता हूँ इस चीज को फ्रॉम द बैक एंड, के बहुत ज्यादा, और मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त कैसा चल रहा है विद लॉकडाउन एंड एवरीथिंग. लेकिन जितने मैंने समझे थे कि एप्लीकेशंस कम होंगी, उससे बहुत ज्यादा कम. और इर्द गिर्द में भी करीब के मुल्कों में भी जो इस तरह की सिचुएशन है, फिर भी वो अप्लाई वो लोग जरूर कर रहे हैं. तो आप अप्लाई करें. आप ये सोच के ना बैठें कि कुछ हो जाएगा तो पता नहीं मैं करूँ ही ना, तो ये तो कोई बात ना हो ना कि आप ट्राई भी नहीं कर रहे. ठीक है. तो स्टूडेंट्स को प्लीज बताइए कि वो अप्लाई करें. दे आर ऑलरेडी लेट. ठीक हो गया. अच्छा, एक और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी है, फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है जी. कि स्टूडेंट्स का बहुत सा ये सवाल होता है क्यूरीज में कि स्टूडेंट को लेट से वो शेफील्ड यूनिवर्सिटी में
अप्लाई कर रहा और आना चाह रहा है स्टडी के लिए, तो ये बताइएगा कि फीस स्ट्रक्चर इसको कितना स्टार्ट में पे करना पड़ता है, कितने % पे करना पड़ता है, फुल पे करनी पड़ती है, वन टाइम पे करनी पड़ती है, या उसको इंस्टॉलमेंट्स में होती है, कैसे एक प्लान है, ये बताइएगा। ठीक है, देखिए वो कोर्सेज जो स्टूडेंट से डिपॉजिट मांगते हैं मोस्टली वो स्टेज एडमिशन, जिस तरह के मैनेजमेंट स्कूल के कोर्सेज हैं, बिजनेस एंड मैनेजमेंट कोर्सेज, तो आप £1000 डिपॉजिट देते हो, वो डिपॉजिट आपकी ट्यूशन फी में से माइनस हो जाता है, वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, इट्स अप टू द स्टूडेंट, जिस तरह स्टूडेंट चाहता है ना पे करना, वो फॉर एग्जांपल आप हाफ एंड हाफ पे कर सकते हैं, आप क्वार्टरली पे कर सकते हैं, आप मंथली पे कर सकते हैं। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो हर मंथ आप प्रेशराइज हो जाते हैं। और आप अप फ्रंट सारा भी पे कर सकते हैं, और जब आप अप फ्रंट पे करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी मिलता है, आपको कुछ % ऑफ भी मिल जाता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन व्हाटएवर कैन बी सेव्ड शुड बी सेव्ड। तो ये टोटली अप टू द स्टूडेंट्स एंड द फाइनेंस, वो फाइनेंस के साथ अपना ये डिसाइड कर सकते हैं। हम उनको ये नहीं कहते बिल्कुल भी कि आप सारे पैसे दे दें या आप इस तरह करें, ये वो चाहे तो वो मंथली कर लें, चाहे तो हाफ। मोस्टली जो मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स वो या हाफ एंड हाफ पे करते हैं, या वो क्वार्टरली 3-4 महीने बाद एक इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। ये मैंने 2 पॉइंट्स देखे। ठीक है, मींस यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलैक्सेशन है स्टूडेंट्स को फीस स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी अंडरस्टैंड, हमें पता है कि क्या हिसाब किताब होता है, तो उसके मुताबिक वो एज लॉन्ग एज दे कीप फाइनेंस, वो जिस ऑफिस में उन्होंने पे करना है वो भी स्टूडेंट यूनियन का ही हिस्सा है, तो एज लॉन्ग एज वो सब कुछ वो बता सकते हैं उनको, एक ही बिल्डिंग में सब कुछ होता है और वो सेंट्रली लोकेटेड बिल्डिंग है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि मेरा सवाल इसलिए था ना कि स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट वो होता है कि मैंने यहाँ पर मेरे पास इतना बजट है और क्या तो मैं जाऊंगा, इतना पे करूंगा, बिल्कुल अंडरस्टैंड करो कि मैं इतना पे करूंगा वहां जाके करूंगा। बिल्कुल इसके बाद मेरा बिल्कुल ऐसे। एक और क्वेश्चन था आपसे कि जो स्टूडेंट, ये जो वीजा प्रोसेस का स्टूडेंट्स की तरफ से ये सवाल है कि वीजा प्रोसेस का कितना टाइम होता है। लेट्स से एक स्टूडेंट आज अप्लाई कर दे, डॉक्यूमेंट्स अपने शेफील्ड यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दिए, देन ऑनवर्ड कितना टाइम होता है वीजा प्रोसेस में, कितना टाइम? देखिए एक दफा जब कैश इशू हो जाता है जी तो उसके बाद मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा नहीं ख्याल, वैसे इट्स वेरी डिफरेंट, ये हर केस पे डिफरेंट है, ये भी एक बड़ा ट्रिक क्वेश्चन है क्योंकि आप फॉर श्योर नहीं कह सकते इतनी देर में हो जाएगा, लेकिन मैंने ऑन एवरेज 2 वीक्स देखे हैं पाकिस्तान, अच्छा 2 वर्किंग वीक्स। मैंने कुछ केसेस को 4-5 दिन में भी देखा होते हुए, लेकिन मैं वो चीज यहाँ पे इसलिए क्योंकि जो एवरेज है मैं आपको वो बता रहा हूँ, 2 to 3 वर्किंग वीक्स, वर्किंग इतने डेज होने चाहिए, 2 to 3 वीक्स में, 2 वीक्स इन पर्टिकुलर में एवरेज में ये रिजल्ट इसका आ जाता है। अब तो ये प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड दिस, अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जब ये ऑफिस ऑपरेशनल होंगे वीजास के और सब कुछ, तो कितना लोड होगा उनका। बिल्कुल। अब ये वो चंद एक चीजें हैं जिनके अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव द आंसर्स टू इट, लेकिन ओके, फॉर दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स, all students please rest assured that there are approximately 8,000 or slightly more than 8,000 international students who study at Sheffield University. I'll repeat, more than 8,000. तो आप ही नहीं है जिसको वीजा चाहिए, वो thousands of और स्टूडेंट्स हैं जिनको वीजा चाहिए, ठीक है, वो एक मुल्क से नहीं, वो कई 150 मुल्क से वो आ रहे हैं जिनको वीजा चाहिए। तो हमारे पास एक वीजा ऑफिस है, एक वीजा कंप्लायंस टीम है, और वंस आप हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, यानी कि जब आप अप्लाई कर देते हैं तो वो वीजा टीम आपके साथ फिर कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। अभी तो स्लाइटली अर्ली है, लेकिन विद इन अ मंथ्स टाइम वो स्टूडेंट्स के साथ फुली इंगेज कर देंगे, स्पेशली उनके साथ जिन्होंने डिपॉजिट पे किया होगा, ताकि उनके वीजा प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए। तो वी हैव अ सेपरेट टीम फॉर दैट। स्टूडेंट्स वंस अगेन प्लीज रिमेंबर, जिस तरह जब आप पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स हमारे एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, एचआर के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एक बंदे को मिल रहा हूँ, मैं मानूर को कराची में मिल रहा हूँ, और मानूर मुझे समझाएंगी कि हाउ टू अप्लाई, हाउ टू वीजा, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, ऑल वुड बी मानूर। हमारे पास हर चीज के सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक। एडमिशंस, काउंसलिंग, क्यूरीज, IELTS, yes, no, me, other courses, Ellison, but for visa we have a completely separate office। और हम थोड़ा सा रिलक्टेंट भी हैं क्योंकि हमारे पास कई दफ़ा ये जो इंफॉर्मेशन होती है वीज़ा, क्योंकि हम उस ऑफिस में खुद नहीं है, वो शायद इतनी अप टू डेट ना भी हो, वो चेंज होती रहती है, और इससे रिलेटेड बातों में, वीज़ा रिलेटेड इश्यूज में अप टू डेट इंफॉर्मेशन पे ही जाना चाहिए, ठीक है। तो फॉर द स्टूडेंट्स
आपको पूरा एक ऑफिस डील करेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। और एक और चीज़ कि मैं HR के कंसल्टेंट्स को पर्सनली जानता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा अप टू डेट होते हैं वीज़ा इश्यूज़ के साथ, तो दे आर योर बेस्ट बेट। थैंक यू सो मच आसिफ साहब जी। मिस्टर टैग जी भानु, हम साइनिंग ऑफ की तरफ जा रहे हैं, बट इफ यू हैव क्वेश्चन तो आप पूछ लें। I have no question. ओके व्यूअर्स, मैं आपसे लास्ट बात ही करना चाहूँगा कि हमारे HR के सारे जो ऑफिस हैं पाकिस्तान में, वी आर वर्किंग, हमारे ऑफिस ओपन हैं, आप हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए प्लीज। वी आर हम जितने भी प्रिकॉशनरी एलिमेंट्स हैं लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग योर हैंड, एंड वी आर अप्लाइंग एवरीथिंग। तो आप प्लीज आए, हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए, अपनी काउंसलिंग करवाएं, बिकॉज दिस इज द पीक टाइम और आपको अभी जरूरत है अपने डॉक्यूमेंट असेस करवा के अपने सीट को जल्द से जल्द सिक्योर करवाएं, स्पेशली एट यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। ठीक है? So before signing off this session, I would like first Miss Ellison to give her final words, and then Mr. Naseem sir. Remember to unmute myself again. Well, thank you very much. This has been a great session, some great questions. And just to reiterate, for those students that are interested in coming in September 2020, is obviously it's an ongoing situation that we're all currently facing. My advice would be just to keep seeing the latest updates on our website, because some of the information I have said today, unfortunately, may be out of date this time next month. So I don't want anyone to be disappointed with anything. So we will upload all of the latest information on our website. Currently, as it stands, we are hoping to be as normal as possible within our 2-meter distancing rules, open as normal as possible on the 28th of September. Yeah, I mean, university generally, I had a great experience. It is a great experience for students. It really makes and shapes individuals. So, and it's going to be a great year to come to the UK generally with the introduction of the graduate immigration route as well. So there's lots of opportunities in what is possibly quite a negative situation we're all in at the moment. So yeah, and I'm my email address, I'm sure it will be passed on, but is alison.witham@sheffield.ac.uk, and happy to answer any questions. And thank you very much from me. Thanks. Wonderful. Yes, Mr. Thank you, Team HR, for organizing this. I thoroughly enjoyed this session. It was a very lively session. Whenever the hour passes by very quickly, it means that it's been great. So I enjoyed it. I have been to the students. I have been coming to Pakistan for this particular reason, which is recruitment, for the past 10 odd years, and I've been working very closely with HR since the very start. They are great people to go for, to work with, and to do counseling with. They've got our full support. आप अपनी एप्लीकेशंस को, स्पेशली इस सेशन के बाद, जो अगर मैं इसको एक नटशेल में रखना चाहूँ, तो the main thing that you need to take away from today's session is कि आप प्लीज़ अपनी इस एप्लीकेशन को डिले मत करें. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं कि करें या ना करें. You're not losing anything with this. So please आप apply करें. Once again, you are more than welcome to apply directly or apply via our agents, which are HR. I'll be more than happy to answer your queries. You can contact me at a.naeem@sheffield.ac.uk, या आप HR consultant से भी मेरी details ले सकते हैं. मैं regularly पाकिस्तान आता रहता हूँ, लेकिन for one reason or another पिछले साल से लेके अब तक नहीं आ सका. April should have been the big month when we normally come to Pakistan, and I couldn't once again because of this COVID-19. So once again, once these restrictions are lifted, inshallah ta'ala, हम दोबारा पाकिस्तान में actively अपने आप को involve करेंगे, आना शुरू करेंगे. Involved तो हम अभी भी हैं, लेकिन online हैं, which is not really the same, I understand. So all the best. Looking forward to questions, and please don't be afraid to ask questions. You see, there is no question that is a silly question. Just go for it, and all the best. Thank you very much. Okay, thank you so much, sir, for your kind words, and thank you again, Miss Ellison, for giving us your precious time.
from your busy schedule and for providing a detailed information to our viewers. In this session, we have discussed about the available scholarship, fees, intakes, admission criteria, and some other important information about University of Sheffield. I hope it helped our viewers and clear their queries regarding the September 2020 intake. Those who have joined later can watch this session on our page. And if you are interested in applying at University of Sheffield, please feel free to contact us by provided email or WhatsApp. You can note down our number, that is 034647470043. That's my colleague Mr. Tahir. Our team will assess your documents and guide you about best suitable course for you and help you to secure your seat at University of Sheffield. Thank you all for joining us today. Take care, everyone. Allah Hafiz. Stay home and stay safe. Thank you.